he is working now in Canada as a motivational trainer. And we will have a very, very honored to have him with us. And I would like to invite him to talk with us. Assalamu alaikum, everybody. And, first and foremost, I can see that bright face at the ground, all of your students and prospective teachers. So I can feel some positive energy from your guys. That's really good. And I'm so honored, and it blew me away because I'm going to present or give you some lectures on team success versus empowerment. So let me give you a brief introduction about myself. I have the same background as you guys are studying here. I used to. And I got my degree from here. And fortunately, I came back to this town because I'm living somewhere else. And I had a small team of 6 members. They might gonna be with you guys in next session with us, and I'm leading that team. So our team members, Maggie, Peter, Randall, Sarah, Muhammad Ghaffar. So we are the team, we are working all over the globe. They are busy in Europe, in North America as well. And I'm taking care here in South Asia. So the purpose of this presentation to let you guys know or increase your energy level to find your path to be as successful. So they might gonna be with you guys very soon, our team, if they are busy somewhere in North America delivering lecture, because last night I spoke to them and they have some session as well there. And I'm covering this South Asia, maybe the neighbor country pretty soon, or some other countries as well, and Karachi and Lahore, and like I'm gonna cover all of the Pakistan. That's my job. So guys, that's a brief introduction about myself. Being a motivational speaker, like I train thousands of employees, multinational company as well, widows, businessmen, laborers, and people from the different walk of life. So most likely, this session is going to be very, very beneficial and fruitful, you guys, and try to get the most out of it. And I'll be highly appreciated. Really, I'm telling you the truth. If you guys will ask questions, as many as you can. Because this session, this lecture, this presentation, this seminar is not as a traditional seminar or being a traditional teacher or orthodox teacher. I'm going to just deliver my lecture and act. Nope. That's why I'm giving you the chance and opportunity. That's not a lecture one way. That's going to be two way. I would like to engage you like a two-way traffic. I'm going to get your opinion. That's kind of a discussion. That's not like just a lecture. So I will appreciate to get your opinion, get your questions, and I'll try my best to give you the proper answer. All right, so we are good right now? Are we? Yes. Perfect. All right. So this is a topic, and as you guys know that how to get to the success. And this is a brief introduction. If you would like to with a bird's view about myself, you can get it. So I'm going to give you a few seconds or a minute to go through. Then we're going to continue afterward. All right. And one question, ladies and gentlemen, if you guys, are you guys comfortable the way I'm talking in English? Is that okay? Because I can speak with the wall, pretty well, I believe. So, you know what? Do not be reluctant. Do not be hesitant. Because, as I said, I want to give you the opportunity to be like that. Come out of your shell. Relax.
purely relax. And if you want to sit along with your friend, you're allowed to go and sit along with your friend. Sit back, relax, and I would encourage you, please, do that at least 3 times. Deep breath in, diaphragmatic. Do it. Go ahead. All right. That's gonna relax your mind and body. All right. Why I'm doing so? Because I want you to come out of your shell and relax like you're home. You're very relaxed. So don't get scared. I'm not scary as well. So, all right. So you guys can ask. So the purpose of this session, did you guys go through? All right. So the first slide I'm going to show you is live in yourself. Why it's so important. What we're going to discuss it. I'm going to highlight 3 things. First and foremost, believe in yourself. It's the most important thing. To be in the pinnacle or apex of success. Because everybody wants to be successful, right? You want to know the purpose of your presence. What's the purpose? Most of us, unfortunately, we spend our life and we don't know what's the purpose. Why God sent us here. And there must be some purpose. Keep moving. Because remember, 3 categories of people around this world. First, and they're in the masses. They think that we are in a prison. This Mother Earth is a prison. And they capture their life behind the bar. And they think that, I got no life. That's the first category, around the world. And the second category, they think that, what's life? Life is just another day. It's just another day. I have no life. Keep complaining about it. And the last in the supreme category of people. And try to be wrong to start from today, and the supreme category is, they're supreme. Is that I'm leaving my life. Vibration. That's what we want, right? Everybody? Agree? Alright, so that's what we want. To lead our life. So I would recommend you every breath to take. Take it as if you are living your life. You are happy. Nobody can stop you to live your life. Do not cancel yourself. Somebody put you behind the bar and you are in the box or jail. No, you are living your life. Every step you take, thank God, I got a beautiful life. That's the purpose. Everybody wants to be happy. Because I remember John Lennon's mom said once, he asked Mom, John Lennon, what is life? And what's its purpose? His mom simply said, happiness. When he grew up, went to the school, and his teacher gave him an assignment and said, okay, what is life? And he wrote, happiness. He said, no. You didn't understand what we asked. He said, I understand. You missed it. You didn't understand. Because everybody wants to be happy. So that's the purpose of this, because we want to be happy. We keep complaining about. Stop complaining. Stop crying. He did it. Otherwise, I would be somewhere else. She did it. They did it. These all are complaining. So I would say, stop complaining and start living your life. And then you will be in the pinnacle of success. And first and foremost, guys, remember, because you guys here are studying here, what's the purpose? Why you guys chose cotton? There might be some concrete reason. If you like it, 100%, make the 100%. Hit the mark. Don't hang around in between. And ask questions to everybody. Never hesitate. Never be reluctant. If you got a question inside your mind, throw it out, ask.
Put it this way. Let me give you an example. If you get lost somewhere in the middle of desert or jungle, or maybe you find a few people around, what you gonna do? You say, hey, hello, sir, ma'am, can you let me know I'm lost? I need to go home. What is the best way to go home? That's what we usually do, right? You're not gonna ask, what's gonna happen? You'll be lost. Nowhere. This is the best way. If you're hungry and you don't know how to ask, because you don't know other language, any other language, like, but you're hungry and you need some food, you're gonna use some of your gesture. I'm hungry. I need some food. So ask. Ask questions as many as you can to your teachers, to your friends, to your family member, to your mom, to your dad. Got it? Any question about that? मुझे बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उर्दू में या अंग्रेजी में सवाल करते हैं और जितने ज़्यादा करते हैं। देखिए पर्पस तो ये है ना, आप इस लेक्चर से, इस सेमिनार से कितना फ़ायदा होगा, it goes to you guys. Get the most out of it, because I'm not going to be here all day long, but you guys, I'll give you I'll try to share some website or email address or fan page, so you might can show some question if you are concerned about. If something comes out, I don't mind, but if something comes out, you guys come across some kind of issue, because I want to be a rocket scientist. Maybe one of you guys want to be a rocket scientist. Ask me how to be, how to fulfill your dream. Because what we are discussing here today, to be happy, fulfill your dream, and keep dreaming. Dream has its own value. If you guys do not have any dream, you do not have any destination. And believe in yourself. If somebody say, hey, you can't do it, because what they're telling you, they can't do it. To try to avoid this kind of negative vibes or negative energy, stay away from, I can't do it. And acknowledge yourself every day and keep saying to yourself, I can do it. I'm born to win. I have some dream. I'm going to do it sooner or later. No ifs, no buts. Make a list. Because make a list and do and go for it. Put your best foot forward. This is the way we are living our life, should be, isn't it? Because the Confucius said, once he said, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. And it works like a magic. Keep moving forward. There is no limit. Sometimes people say, and that's like people understand and they keep talking about the sky is the limit. I'm sorry, but I have different philosophy and try to implement in your life. No limit. Human is limitless. Increase your horizon. Increase your vision, enlarge your vision. See, dream. If you want to be a scientist, you're here, you say it to yourself, and start from today, keep thinking. Ask to your teacher, professor, and everybody, and they're gonna help you. These gentlemen and ladies, they're gonna help you to fulfill your dream. If you want to do some research, go to them. Please give me an assignment, give me a project. I want to put myself in the right direction because I have come first. And I want to be something. Remember, you are what you think. You are the only one who can save yourself. Nobody can come and appreciate about yourself. You did a nice job. Don't care. I don't need it. And if you got a dream, you got to protect it. Why I'm telling you, you got a dream, you got to protect it. Because sometimes there are negative vibes around and you discuss your dream with somebody that said, come on, that's a funny idea. It stands nowhere. That sounds ridiculous. What's going to happen if you're not brave enough, if you do not have potential?
you're gonna give up. Because that doesn't make sense. I'm gonna give up on my dream. Nope. Never, ever give up on your dream. That's the beauty of it. Believe it or not, it works. My example, let me tell you the story. I was a student here. I'm not a teacher, like a talking teacher. I'm giving them some lecture. Or spreading my energy, sharing my energy with you guys. I want you to be successful. I'm not a traditional teacher to write it down to see. And I need mentors from my life. When I was studying here, not only here, I had my college and other universities, and I was so seeking and begging to people in my family, and my relatives, and my professors, please, I have some dream. I want to share that. Give me some path, guide. Unfortunately, I couldn't get an idea. But everybody needs some mentor. If you can't find your purpose, find your passion, what you are passionate about, and it leads to your purpose. Do not spend your life without doing anything, without any dreaming. Because you guys are beautiful. You guys have energy and talent, and say to yourself every day, when you see yourself before a mirror, say yes by calling your name. Thank God I'm here. And that's the purpose of my presence. And I'm so glad you make it beautiful. Nobody's ugly. Everybody is beautiful. Everybody has energy. Everybody has potential. Say thanks to your God. And remind you every single day. You have some purpose. You have some dream. What other people thinking about? Because you know what? Let me tell you, and I'm going to reveal some secret. And I would like to share some secret. If you have dream, go for it. Do not share if you think that somebody's going to let you down and going to spoil your idea. A dream. Say something negative. What's going to happen? You will get some negative energy. I don't want you to get some negative energy. It should be positive. Like a Red Bull. And you're going to do it. So keep doing. Believe in yourself. Yes, you can do it. Keep reminding yourself every single day. Yes, you can do it. If you want to be a scientist, if you have a dream to be a teacher, if you have a dream to be a professor like your professors, yes. Ask from today. Can you give me some idea? They would love to because they are a teacher and they are eager to help you guys. They're very beautiful people. Trust me. Because that's our job. To guide you, to let you know how to be successful. But keep moving forward. If you're not going to take steps, you're not going to remain the same forever. So I would like you to take your step forward every time. And fear factor, please, please, please guys. You guys know what's holding us back. कौन सी चीज हमें रोकती है? किसी के पास कोई जवाब है? Fear. Wow, excellent. Excellent. Fear. डर. Oh, ये रोकता है हमें. लोग क्या कहें? And you know what? There are different categories of fear. खौफ और डर की बहुत सारी categories हैं. और मैं आपको बताता हूँ secret. That's the secret. If you guys can understand, inshallah, and a little bit late, you guys are going to be very, very supreme. And we can say that, this one, and this one. They were students and now they are super positive. Fear factor, सारी चीजों की जड़ और उसमें सबसे बड़ी जो fear है, जो खौफ है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, तो हम डरी और सहमी की जिंदगी अच्छा, फिर इस तरह का जो हमें सिर्फ खौफ है कि कौन क्या रहेगा। Let me ask you a question. मुझे ये बताएं कि आप वो लोग जो critics हैं, criticize करते हैं, are they paying your bill?
your house rent, your electricity bill, your hydro, your books, your tuition fee, nothing. Grocery, I gotta walk in the grocery, which way to go? So why should we take care of them? You know, stay away. You don't need to criticize me. I'm strong enough, I'm brave enough, and I have my own destination. Alright? This is the way. Yeah. I like that energy. You know what? We can keep silent. That's what I want you to come out of your shell. And that's what I said. Take some diaphragmatic breath and relax yourself. Sit back. So I like that energy. Right? Are we on the same page? You guys understand what I'm saying? Positive, affirmative, 100%. Yeah. Appreciate that. Alright. Guys, so far, I'll give you the chance because why I keep saying that, this is not a one-way traffic, it shouldn't be. I'm trying to let you guys know as much as I can today. But in this brief time or short session, I cannot cover everything which I'm really eager and high come first to spit it out and share everything with you guys to get some idea how to be successful. So I believe you guys have some idea. First of all, believe in yourself. You can do it. If your friend, your relatives, mom, your dad is telling you you can't do it, don't listen. First and foremost, stop them. Take care of yourself. You are worth it. God created you as a human being. And as a human being, we are the supreme being, are we? Ashraful Makhluqat. Right? We are better than angels. That's why God created the best being all over the world. Super being. That's what we are. And that's our job. To take care of this temple. My mind. Right? And I'm going to go through some of the clips. Most likely it's going to work out and you guys will get some positive energy. How to start living your life. What's gone till up to today? Gone is gone. Don't worry about that. Don't cry over spilled milk. Alright, so don't cry over spilled milk. What's gone is gone. Because time, once lost, can never be regained. That's the most important thing. It's time. But if you are putting yourself, you don't like to do this, and somebody put you down because your dad, your parents, your mom, your uncle, they want you to do this, to study this. I would recommend you, you know what, to be honest with you, I'm not lying to you, I'm not giving you a false picture. Stop. Because that's your life. Which would you like? Ask yourself. You like painting? Go, trust me. You're gonna be the best painter. If you like something else, you're gonna be a pilot. Go for it. Fulfill your dream. I remember, you know what, because I can quote that. I know that a lady, she climbed somewhere in K2, and she was the first lady in Pakistan. She broke all the records before. She did. And she's from remote area, somewhere in she did it. And now everybody's praising about her because she took a bold step. The whole world is talking about from Pakistan, that's a lady, she climbed because she loved to do that. The beauty of what you are what you think. If you don't like something, please do not waste your time. You are wasting your energy, money, and everything. What would you like? Ask yourself, what would you like? And explore yourself. Because do what you like. And like what you do. So what else we need? Do what you like and like what you do. So you're gonna go to the success very, very fast. आप तरक्कियों की मंजिल को बहुत जल्दी तय कर लेंगे, पा लेंगे। और इससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती कि जो आप सोचते हैं, जो ख्वाब देखते हैं, अपने ऊपर यकीन रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं, firm belief, self esteem आपकी खुद एतमादी है। हम तो बहुत ज़्यादा पजल होते हैं और हम गलत समझते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि कोई इंसान
अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है या फारसी बोल सकता है या उर्दू बोल सकता है या कोई आदमी बहुत अच्छे गाड़ी और हवाई जहाज रख सकता है ना. Confidence is the accumulation of different sources. It tells you everything. That's a matter of self-esteem. आपकी खुद एतमादी होनी चाहिए कि आपको खुद पर कितना एतमाद है. कौन सा दुनिया का ऐसा मजहब है जो आपको कहता है कि खुद एतमाद ना करो, अपने आप से प्यार ना करो, झूठ बोलो? नहीं, सारे मजहब ये हैं. Go, get it. What is your destination? अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को वक्फा देते हैं और इन तमाम बातों में जहाँ हमने बात की है, आप लोगों के दिमाग में जो जो सवाल आए हैं, मेरे प्रोफेसर हज़रात, टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, आप लोगों के पास कोई सवाल हो, प्लीज़. Before dying, what I'm gonna do, that's my dream. अपनी ज़िंदगी जिए और खूबसूरत तरीके से जिए, इसलिए कि हर इंसान को पूरी तरह से आज़ादी है. फ्रीडम के लिए दुनिया में जंगें हुई हैं और फ्रीडम कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से. इट्स योर माइंड. अगर इसको हमने लॉक करके रखा हुआ है, हम कैसे जी सकते हैं? सो प्लीज़, हैप्पीनेस का रूल है कि व्हाट वुड यू लाइक, डू इट एंड फुली, राइट? कोई सवाल नहीं? कि तमाम लोगों के ऊपर, ठीक है, हर एक शख्स चाहता है, सारी दुनिया में जो आया वो नहीं चाहता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर हो गया, उसका कोई मकसद हो, लोग उसको रिकग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, ठीक है. जिनके पास प्रॉब्लम ये है कि आप दिन की रोशनी में जाएंगे और दिन की रोशनी में वापस आएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो शख्स अपने तमाम ख्वाब पूरे कर सकें? यस. देखिए, excuse me. Is that okay? All right. अच्छा, देखें, बहुत अच्छा और शानदार सवाल था. हमारे सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग में और हम हर रोज़ कम अक्रॉस होते हैं, और सबसे बड़ा एक फेयर फैक्टर ये है, किसी से पूछें हालात सही हैं. ये आजकल बड़े बूढ़े कहते हैं कि आजकल ज़माना ऐसा आ गया, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी सी बात कि ज़माना हमेशा से ऐसे ही था और ऐसे ही लोग थे. आदम एंड ईव थ्रू, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हुआ है, उसके बाद से लोगों ने यही एक कंप्लेन की है कि हमारा ज़माना अच्छा था. हो सकता है आप लोग पढ़ के जाएंगे, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, फोर्थ फाइनल, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा कि हमारा बैच सबसे अच्छा था. ऐसा ही है ना. अब जो बैच आया वो उतना अच्छा नहीं है, तो हम कंप्लेन बहुत सारी करते हैं. पहली चीज़. अच्छा, देखिए, आपके इर्द गिर्द इतने सारे हम लोग बैठे हैं और माशाल्लाह हम सबके अंदर एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी, एंड वी कैन फील इट. ठीक है ना, हम इसे महसूस भी कर सकते हैं. इसलिए कि आपको किसी ने जकड़ा हुआ नहीं है, किसी ने बांधा हुआ नहीं है, पूरी तरह से आप आज़ाद हैं, आप सब चीज़ें सोच सकते हैं. तो सबसे पहली और खूबसूरत चीज़ कि आपका फेथ और आपका बिलीफ किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, आपका फेथ और बिलीफ होता है. और उसके बाद हमने बात की कि बिलीव इन योरसेल्फ, कि व्हाट वर्स कम टू द वर्स. मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और फिर आपको कोई डर, कोई खौफ नहीं होता, इसलिए कि हमारे अंदर से वो वाइब निकलती है. यकीन माने, हमारे अंदर से वो वाइब निकलती है कि कुत्ता भी उस वक्त भौंकता है चोर को देख के, इसलिए कि चोर के अंदर से एक नेगेटिव वाइब निकल रही होती है और उसे खुद नहीं पता होता है, वो डाका डालने के लिए कुत्ता भौंकना शुरू करता है. इसी तरह से जब हम डर और खौफ के साथ घर से निकलते हैं, क्योंकि हालात ख़राब है और सिर्फ हमने सुना है और कुछ देखा भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम हालात को ही बुरा भला कहें कि हो क्या है. आस्क योरसेल्फ, आई एम हैप्पी, मेरे साथ मेरा गॉड है, मुझे अपने ऊपर यकीन है, खुद एतमादी, यही तो चीज़ें हैं, और आप एक अच्छे कॉज के लिए जा रहे हैं. तो आप अब जागते हुए 24 घंटे अपनी आंखों से ड्रीम देख सकते हैं. एक चीज़, ठीक है. दूसरी चीज़ है कि प्लीज़ मेहरबानी करके, हम सब जानते हैं, stop complaining about anything, because once it starts you're gonna cry, you're gonna say this and this again. As I said, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता अगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया होता. मैं बहुत बड़ा
रॉकेट साइंटिस्ट होता, नासा में होता, अगर मुझे हालात अच्छे मिलते, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी होती, अगर मेरे भाई बहन और दोस्तों ने मेरा साथ दिया होता, अगर मेरी एजुकेशन बाहर से होती। देख रहे कितने सारी अगर मगर। ये सारी चीज़ें कंप्लेनिंग। Stop complaining, stop crying. What you have, this is the best. Bird in a hand is better than two in the bush. अभी आपके पास क्या है वो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा है। इसको मैग्नीफाई कैसे कर सकते हैं? हमारे एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने ख्वाब देखा था और उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई आज से 15-20 साल पहले। पर उन्होंने ख्वाब देखा था कि हम यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में इस जगह होना चाहते हैं, और उनके सारे दोस्त थे वो कहते थे ये ख्वाब है, don't even talk about it, you're not a bright student, you haven't got your position. But they were so determined and they are here. I don't want to quote their name, but they are here and they are good teachers. How come? Because they dream. Simple. And they have some destination. Why not you? ठीक है? Any thoughts, please? एक बात अभी आपने बात की fear factor। जी। तो मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा कि शाइनेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं नोट कर रहा हूँ कि अब तक के बच्चों में है, तो हमारे बैच के ये भी एक पार्ट में फियर शाइनेस। जी हाँ, ये इससे अगर इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि जब आपके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब, मतलब जो हर कदम पे आपको रोका जाए, नहीं ये नहीं हो सकता, यूँ नहीं हो सकता, फलाना अगर मगर इफ बट कैन जो भी, तो उसमें हम कैसे अपने न्यू जनरेशन को उसी तरह या उस खौफ पे कैसे हम काबू पाएँ? मैं आपकी बात समझ, I understand what you said, where you come from, because most of the people we come across this kind of thing, like as this gentleman said, he said, because that's the first factor we come across and we find in ourselves, I'm pretty shy, that's my nature. You can change it if we are, and what's holding you back? Again, what's holding you back? Because I'm shy. What people gonna say? What he gonna say? What she gonna say? What? No. I should not move like that. I should not say like that. That's the first thing. Block your barriers. And I'm gonna show you some, look at this. Look at this. That's a perfect time. Look at this. Expose yourself to your deepest spirit. After that, you are free. So what's holding you back? I'm shy. I cannot walk through. No, I have to go through here. All right, I'm walking. I'm keep walking. That's the way. All right, guys. So I'm among you guys here and speaking to you guys. I'm so glad. That's holding you back. For instance, if I'm going to say, one of you, anybody can come over and introduce yourself, you guys are going to be shivering. Because you know why? Yes. So let me tell you the truth. Why? Because unfortunately, you guys, the system, like, when you guys were a little kid, you didn't get a chance to come and introduce yourself or present something. We have some loopholes in ourselves, which I can feel it. Because it's the most hardest part. When we come over to sell something, what comes up? Oh, for God, man, like, I need to go back. You know, as soon as quick as can. That's the most toughest part. So what? Face it. Nobody gonna say it. What is the other way? Practice. And stand before the mirror and say to yourself, you are beautiful. You have talent. You have confidence. You can do what you would like to do. Nobody can stop you, and one day you guys will be here. That kind of confidence I want. Yes? Makes sense? Isn't it? Perfect. That's up to the mark. That's what we want. You to be here. That's not. See, look at your teachers. How confident they are. Every day they come and deliver the lecture. Okay, guys, write down this thing, and we're going to discuss this topic today. It's like, oh, they are so good. You guys can be.
And that's going to be like just a cup of your tea. Yeah, that's your, like very, very easy. But what we need to do, practice. If you something scared you, look at this. Like, does it make sense? So beautiful. Look at this small little cute kid. No fear at all. But we start barriers. What? Because you know what? When I came to from the different part of the world, and there were a lot of people, they keep on telling me condition, situation. I felt like, stop doing so. One time somebody told me, I understand. Why you guys keep talking? If somebody's saying something about what you know, not need to look it again, hear it again. What's going to happen? Because that's a negative why. Automatically, you're going to absorb, right? So they said, I felt like, what? I understand situation and condition. Everything is very, very good. You can make it better by yourself. Because if you love yourself, if you take care of yourself, that's more than anything else. That's more than anything else because you look. Sometimes few of you guys are most likely you guys come across. Sometimes we ask like, how? You know what? You are so confident. You look so beautiful. You have all the ideas. How do you manage yourself? Sometimes they don't know, but they know the truth. They find out the secret. And I'm here to let you know the secret. How to be successful? Successful because you have a dream. Go for it. Go for it. आपका कोई सवाल है? Please. गोली से डर लगता है कि वो सामने आ रहे हैं। Pardon? I'm sorry, say it again. गोली से डर लगता है कि वो सामने आ रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया आपको. Fear from bullet. Okay. Can I face it? Oh, really, you that kind of fear, or okay, I understand. So what is the best way if you fear? That's the fear you have. Okay. If you find some bullet, but that's that's a technique. I started playing with it, and put some hammer on it and throw it away. There was a little thing which was scaring me a lot. Right? I start playing with it. Borrow with anybody, I don't know, or from the government or whatever, I don't know. And start to play with it. This little thing, it was so scary, and I keep on, it's scaring me. Hammered on it, break it, and throw it away, like this, like the fear factor. Like you guys have seen. You know what? Because we have a little passage of time, we're just gonna go through few of the clips, and it's gonna help you a lot. And if you guys have any questions, any concerns, any issues in your life, please discuss it with your loving ones, your mom or dad, and tell them. Go ahead, please. जब भी जितने भी स्टूडेंट को उनका एडमिशन हुआ है तो हम रोज़ाना मतलब आते हैं यूनिवर्सिटी और जो भी हमें असाइनमेंट मिलता है या वॉट एवर हम चाहते हैं कि वो बस कंप्लीट हो और ख़त्म हो और फिर हम घर जाएँ। फिर हम घर जाते हैं, हम अगर हम ट्यूशन दे रहे हैं या कुछ भी हमने दिया और फिर हम चाहते हैं कि बस अब ये टाइम स्पेंड हो गया, अब हम सोने चले जाते हैं। तो फिर हम सो जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा हम सोचते हैं कि यार हमें फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर पॉइंट्स लेकर के जाना है या वॉट एवर, ठीक है। फिर हम घर आते हैं, फिर हम सोचेंगे आज खाने में क्या बनाए या वॉट एवर, फिर अगर हमें कोई असाइनमेंट मिला तो उससे कंप्लीट करें, बस कंप्लीट करके घर चले जाएँ, ठीक है। तो सर ये सब क्या है मतलब, और हम जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन किसी शख्स ने कितने सालों से या कितने महीने से नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं मतलब, जैसे हम अगर यूनिवर्सिटी में आए हैं तो उसकी लाइफ ऊपर इतनी भारी हो गई है या फिर इतनी क्या है कि मतलब। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। Correct me if I'm wrong, like what my understanding is, what you said. आपने कहा कि इस कदर बिजी और हेक्टिक लाइफ हो गई है कि आपका एक साइकिल में घूम रहे हैं, रोज़ यूनिवर्सिटी आना, असाइनमेंट मिलना, और इस कदर तादाद की चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। उनमें से एक चीज़ है कि हम ड्रीम किस वक्त देखें, और उस वक्त देखें जब हमें टाइम मिले। अच्छा, मज़े की बात है सब,
ड्रीम देखने के लिए, ख्वाब देखने के लिए आपका बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है हमारे दिमाग में, मेमोरी, जो मेगा माइक्रो सेकेंड में आपको उठा के जुरासिक पीरियड में, हेलोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक पीरियड में ले जाती है, मैक्रो सेकेंड, और यू गेट बैक टू जैसा आप सोचते हैं वैसा ही पाते हैं और वैसा ही हो जाते हैं आप अपने बारे में सोचेंगे कि आप शहजादे और शहजादी हैं, आपके हर चीज़ें वैसी हो जाती हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे कि आप सुपरमैन हैं, आप सुपर वुमेन हैं, आपके बोल चाल उठना बैठना सब कुछ हो जाता है। तो इसके लिए और इसमें पैसे भी कोई नहीं लगते। सबसे खूबसूरत बात कि ड्रीमिंग, चलते फिरते उठते बैठते आप ड्रीम, यही तो खूबसूरती है कि देखें, एक चीज़ हम कहते हैं कि बरसाती मेंढक, थोड़े दिन के लिए हमें कोई पैशन उठता है, ख्वाहिश उठती है, और उसके बाद कहते हैं 1 महीने 2 महीने मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके बाद पैशन मीन्स है कीप गोइंग until you're done। बिकॉज मैं तुम्हें आपको बताता हूँ कि जितने बड़े लोग हैं, मोज़ार्ट हो, आइंस्टाइन हो, एडिसन हो, उन्होंने ख्वाब देखा और प्रोलिफिक ख्वाब देखा और उनकी ताबीर मिली। एडिसन से किसी ने पूछा कि इंटरव्यू लेने आया अखबार का, उसने पूछा कि आपने सुना कि ये बल्ब ईजाद करने में आपको 1000 तरीके लगे, 1000 तरीके से आप फेल हुए। थोड़े मुस्कुरा के उन्होंने कहा मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने 999 नए तरीके डिस्कवर किए इस चीज़ को बचाने। दैट्स वी कॉल इट पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव की हमेशा हम बात करते हैं कि बी पॉजिटिव और डोंट बी नेगेटिव। मैंने नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए कि दुनिया में जब हम बात करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जब हम बैठते हैं साथ तो हम बात करते हैं, तो हर आदमी guys are talking about the be positive, be not negative. That's a very thin and narrow line between being positive and negative. When I discuss with my colleagues and other motivational speakers like Randall and Chris, थोड़े से मुझे बेहतर एडवांटेज क्यों मिलता है कि इन लोगों ने, टीचरों ने मुझे यहाँ से मास्टर्स कराया, उनकी डिग्री कम थी। देखिए, मेरी डिग्री मास्टर्स बॉटनी की थी, लेकिन मेरा प्रोफेशन दूसरा मैंने चूज़ किया। क्यों? इसलिए कि मैंने सोचा, मैंने उसके लिए ख्वाब देखा। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बॉटनिस्ट हूँ तो मैं बॉटनिस्ट हूँ, मैंने अपने शौक के लिए पढ़ा और इट्स रिवील्स मी मैं कहाँ पे हूँ। आप कुछ भी बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। अपने अंदर से पता करें कि आपको खुदा ताला ने कौन सी अच्छी तमन्नाई और ताकत दी है। आपका सवाल था, लेट्स गेट बैक टू योर, कि एक हैक्टिक स्केड्यूल हो गया और साइकिल है, उससे हम कैसे निकलें। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, इसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट, प्रायोरिटी। व्हाट इज द मेन एंड बिगेस्ट प्रायोरिटी? प्रायोरिटी कम फर्स्ट। मैं समझता हूँ कि असाइनमेंट दिया है, उसमें हम एंड यू हैव टू मार्क इट टू योरसेल्फ, लाइक ओके ये असाइनमेंट है, आई हैव टू हैव डू इट इन 15, 20, 30 minutes, not more than that. I have to take a break just for 15 minutes because we guys work in a different part of the world, like the Western world. After every 2 hours, we take 15 minutes coffee break. We have a concept. Go, relax your mind, get your coffee, and get back exactly after 15 minutes. How many people we are doing so? We are following so? No! So it means we are, you know what? Here, मैं आपको बताता हूँ, एक unfortunately irony पे हमारे पास सबसे ज़्यादा वक्त है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सिर्फ आपके पास है और वो आपको सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। 24 घंटे, यही 24 घंटे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हैं, किसी भी इंसान के पास हैं, और वही 24 घंटे हमारे पास भी हैं, द सेम 24 घंटे। और वो 24 घंटे में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी खुशियाँ इकट्ठी कर लेता है और हम इतनी सी भी नहीं कर पाते। इसलिए कि अगेन हमारे पास बहुत सारे, every problem, you might heard that, every problem has a solution, but I would say every problem has more than one solution. Try to figure it out. कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो स्केड्यूल है उसे चेंज it. If you cannot change yourself, nobody gonna come and say, hey, change yourself. You gotta start. Because आप सांस ले रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पे पैदा किया है। आप किसी की ज़िंदगी नहीं जी सकते। Don't live your life. Oh, don't live anybody's life. I'm sorry. Live your life. वो चाहते हैं, वो चाहता है कि मैं इस तरह से जीऊँ। No, live your life. Because आप सबसे, you are the precious thing, human being. ठीक है? किसी हद तक समझ में आया? कुछ है तो है, या और कोई आगे सवाल है? Clear? Anybody else? Yes, please.
अच्छा, एक चीज़ है वो ये है कि बात हो रही है ड्रीम्स जी ख्वाबों की बात हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजा लेते हैं और कुछ ख्वाब जो हैं वो पूरे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अच्छा, पॉइंट ये है कि ठीक है, सबका हक है ख्वाब सजाना, लेकिन अगर आपने वो ख्वाब देखा है तो उसे पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, ख्वाब तो सजा लेते हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं करते, और फिर जो है वो गिला ये होता है कि हमारा ख्वाब पूरा नहीं होता, और फिर उसके अपने ऊपर तारी करना और फिर अपना कॉन्फिडेंस मज़ीद शेक करना। ओके तो चीज़ ये है कि यहाँ जो आप लोगों को सिखाया जाता है, मेहनत की जाती है, अभी स्टूडेंट ने बात की, असाइनमेंट दिए जाते हैं, एक रूटीन है, एक साइकिल है, ये बेसिकली स्ट्रगल है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल। एब्सोल्युटली आपको यहाँ पर बेसिकली ट्रेन किया जा रहा है एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। आपने यहाँ 1 या 2 साल इस साइकिल में गुजारना, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आपको बड़े बड़े असाइनमेंट्स जो है उनको सॉल्व करना। अगर आप छोटे छोटे असाइनमेंट से बर्दाश्त हो जाएंगे और स्ट्रगल नहीं करेंगे, लाइफ ऐसे नहीं गुजरती। लाइफ सिर्फ ये नहीं कि आप जो है वो ड्रीमिंग और स्ट्रगलिंग कुछ नहीं है और आप सोचें कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं। ख्वाब देखें और ट्राई टू सॉल्व, ठीक है ना, किस तरीके से, और फाइंड द वे टू सॉल्व, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, जो भी आपके पास ड्रीम्स हैं, आप उसके लिए जितनी स्ट्रगल करेंगे उतना आप उससे करेंगे। And let me get it straight. What this gentleman said, he said, if you guys keep dreaming, it's not worth it. If you keep dreaming, of course not. But if you have a dream, because if I got a dream and a thirst, if you are thirsty to have some water, what you gonna do? You're gonna find some source to quench your thirst, right? To have some water. So that's what it is. If you have some dream, go for it and struggle. What he said, what we are giving you assignments. Because as I said earlier, we are giving you the path, the ground to play. If you want to be a researcher, scientist, a scholar, author, this is a platform they are providing you by giving some assignment. Okay, let me see. And that's should be your invention. To put something new on it. It shouldn't be like orthodox copy paste. No. Please try to find your own way. What it tells you. Because if you're like out of 20, 30 people, your teacher gave you an assignment, maybe they can find 5 people. They said like, oh, that's pretty interesting. And that's teaches me, or that appeals me a lot to be a scientist, and I'm gonna do that. I'm gonna ask this gentleman, my teacher, my professor, sir, I want to write some research paper. How could I make it? Gotcha? Clear? Excellent. All right, so we're gonna just go through a few clips, and after that, most likely we're not gonna spend too much time to wrap it up because we get a limited time, and I have to talk to my other friends as well. So please, yeah, just go through like random, doesn't matter. I'll let you know. Yes. Go ahead. सर, हम लोग कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करके जिससे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? अच्छा, देखें, सबसे खूबसूरत बात है, आई अप्रिशिएट दैट। मैं आपने सवाल किया और आपके पीछे जो लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए जिन ने सवाल किया, हम बहुत खुश हैं। आपके तमाम कॉलीग्स बहुत खुश हैं कि आप लोगों ने सवाल किए, इसलिए कि उनके दिमाग में भी मोर और लेस इसी किस्म के सवाल थे। तो सबसे खूबसूरत बात है कि यू आर कॉन्फिडेंट। देखिए, आपने सवाल किया इतने सारे लोगों में और इसका कोई ख्याल नहीं किया कि आया लोग मुझ पर हंसेंगे, रिडिकुलस सवाल है या फ़नी सवाल है। किसी किस्म के भी सवाल हो, कोई भी रिडिकुलस और फ़नी नहीं होता। एवरी आइडिया, हर आइडिया, इट लुक्स weird, stupid at the beginning until it's done. ठीक है, अब आपने कहा कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस है कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों का। तो मैंने आज सबसे पहले आप लोगों को कोशिश ही की कि आप लोगों से कहूँ कि आप सवालात करें जो आपके जहन में, जो इमेजिनेशन है, बी इन योर कैप, थ्रो इट आउट। पहली चीज़, कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़ आप उसी तरह से सोचें। आप विजुलाइज करता है इंसान। मैंने कहा इमेजिनेशन, अल्लाह मैंने इस कदर ताकतवर बनाया हमारा माइंड कि सेकंड और मेगा सेकंड, माइक्रो सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। कोई बड़ा सा किला भी बना लेता है और उसे तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकता है।
और उसी तरह से वापस तो आप जिस तरह का अपने दिमाग में ख्याल करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, अपने आप से बार बार कहना है, अपने आप से बार बार कहना होता है। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, अपना नाम लेके कहना पड़ता है कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारी अंदर खसूसियत है और ये तुम्हारे ख्वाब हैं। और ख्वाब देखे हम कहते हैं ना कि डे ड्रीमिंग, कम आउट ऑफ योर डे ड्रीमिंग। But in 2012 or 13, that was the most hottest topic. Stop dreaming. Before, the people were saying all over the world, oh, stop dreaming, daydreaming, come out of your daydreaming. But do you realize कितनी वैल्यू है ड्रीम की जो हम खुली आंखों से देख रहे होते हैं, इसलिए कि मेरे आगे कोई ख्वाब है और मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं हासिल कर लेता हूँ। ये सलाहियत दी है इंसान को खुदा ताला ने। तो कॉन्फिडेंस इसका नाम है, जिसका आप इमेजिन करते हैं तो उसका ख्याल करते हैं, आपके चाल ढाल, the way you talk, the way you speak, the way you eat, the way you drink, the way you sleep, everything counts. तो वो मैग्नीफाई करती है आपकी शख्सियत को। Yes, go ahead. And guys, please put your attention to her, what she is asking, because yeah, she had a question, please. सर अभी आपने कहा कि पास्ट जैसा भी हो, अच्छा बुरा, हमें भूलकर जो हमारा प्रेजेंट है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। Absolutely. लेकिन सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पास्ट से एक लेसन मिलता है, अच्छा हो या बुरा। Very good. अगर वो लेसन बुरा है और हमें आगे भी करना है तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस है, लेकिन बार बार ज़हन में यही सवाल आता है कि माइट भी ये दोबारा हो जाए जो हुआ है, तो किस तरीके से मतलब हम Very आगे good. बढ़ेंगे? That's a good question, a very techy question. देखिए हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने एक मेमोरी फिट की है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और उसमें हमने इनको 3 हिस्सों में तोड़ लिया है। ये इंसानों ने बनाया है। जैसे हम कहते हैं कि टाइम डजंट एग्जिस्ट बट क्लॉक, हो सकता है कि वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने क्लॉक बनाई है कि सुई इतनी दफ़ा घूमेगी तो 1 मिनट होगा, टिक 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 5 मिनट होंगे, यहाँ से वहाँ तक जाने का डिस्टेंस। वी कॉल इट टाइम एंड स्पेस in metaphysics. Anyhow, let me make it short. तो हमारे पास past, present and future होता है। अल्लाह ने रखा है हमारी मेमोरी में, हमें अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को हम याद करके थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं और बुरी चीज़ों को याद करके खौफज़दा यार होते हैं। लेकिन अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए ही रखा है हमारे दिमाग में, वो आते हैं और चले जाते हैं। अगर मुसलसल हमें खुशी के लम्हात हमारे दिमाग में रहें तो हम पागल हो जाएं, अपने प्रेजेंट में ना जी सकें और फ्यूचर कोई ना हो। तो वो थोड़ी देर के लिए झलक देते हैं, या तो हमें वो अफसरदा कर देते हैं या हम उसकी खुशी में मुब्तला हो जाएं, और अगर किसी अफसरदा चीज़ों को सोचते रहें तो उसी तरह से हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये चीज़ है, टेक लेसन्स फ्रॉम योर पास्ट। आई एम नॉट गोना डू दैट, बट स्टिल वी आर नॉट परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर गोना गो आफ्टर सम काइंड ऑफ परफेक्शन, you're not going to get it in this world because nothing is perfect. तो हम इंसान हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, हमें उससे हो सकता है कि हमसे वो गलती बार, लेकिन कोशिश ये होती है अगर गलती हमसे ना हो, लाइक ट्रस्टिंग, हमें जैसे हम ट्रस्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स पर, अपनी फैमिली पर, किसी पर भी, राइट। तो हमें ट्रस्ट मिला, हम वो ट्रस्ट बहुत बुरा रहा, लाइक ट्रस्ट टूट गया, लेकिन क्योंकि हमें जीना है, हमें ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें अपने फ्रेंड्स पे दोबारा ट्रस्ट करना होगा। हमारे माइंड में जो पास्ट में ही होगा, तो किस तरीके से हम करेंगे? Okay. माइंड भी हम दोबारा करें और वो फिर Okay. Listen. First of all, है। yeah, I understand. Because as I said, you don't need to get any assistance. Trust in God first and foremost, and afterward, trust yourself. Second, if something happened, you don't need to let them know like you're my friend and I started trusting you 100%, and I can die for you or you can die for me. They are your good friend, but you gotta keep in your mind, because the best friend is your God and yourself, and the rest of the day are. But don't say that if they're not gonna do that, that's an expectation. Somebody said, and that's a good quote I'm gonna share with you guys. I do not expect, but accept everything. I do not expect anything, but accept everything. That's the beauty. So less expectation or zero expectations, that's the key.
to keep yourself happy, because I don't want to get anything from my friend. I wanted to give it to them, my love, my care, my everything. But I'm not willing, because the world is your reflection. That's an echo. The life is an echo. What you say, it comes back to you. So always say it's good to yourself. That's an echo. That's a reflection. If you're going to say something bad about yourself or somebody else, believe it or not, it comes back to you in the same state. In order to understand yourself, to get happiness, you got to think openly. There is no limit. Go think as big as you can. This is the way to live our life. All right, so guys, we're gonna just gonna go through it. इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं add करूँगी। Yes, please, go ahead. देखिए, हर इंसान के साथ कभी अच्छा नहीं होता, उसके साथ मोस्टली मेरा ख्याल है कि बुरा नहीं होता। इसमें सिर्फ एक काम करना होता है कि जो आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, वो होता है आपका सेल्फ असेसमेंट। लाइक अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत बात की, आपके गलत वर्ड इस्तेमाल किया, क्या आपकी बैक बाइटिंग की, लाइक दिस ना, तो उसके लिए आप ये सोचें कि क्या जो कुछ कहा गया वो मेरे अंदर है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अगर आपने फील किया वो आपके अंदर नहीं है, देन ओके फाइन। हमें सराउंडिंग की कभी केयर नहीं करनी चाहिए। हम जस्ट केयर करें अपनी, जब हमारे अंदर नहीं है तो ठीक है, एवरीवन कैन से एनीथिंग, सो इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी सगे बहन भाई, आपके पेरेंट्स के साथ आपको फील होता है कि जी वो मेरे भाई को या मेरी बहन को इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे नहीं देते, तो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो नहीं रह सकते, भाई बहन को छोड़ के नहीं रह सकते। तो सिर्फ आप एक असेसमेंट करें कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो वो उनको अपील नहीं करती, उनको अप्रिशिएट नहीं करती। तो ये चीज़ होगी कि आप अपने अंदर वो चीज़, अपना पोटेंशियल को अपने अंदर देखें कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेवलप, अगर है तो जस्ट कीप क्वाइट एंड टेलिंग देम कि नो, दिस थिंग इज नॉट लाइक दैट। Yes, that's a very, very goodful and fruitful and also thought-provoking things, which we are discussing with you. That's why we say like the beautiful mind. If you guys have a beautiful mind, and you know what, please do me a big favor. See outside the box. We usually think that I'm in the wrong box or you're inside the box. In fact, there is no box until you make it. So you are limitless. You can think whatever you feel like too. लेकिन एक आप काम करें. Please, I'm requesting and insisting you. Start thinking. Being a science student, botany के जितने भी science student होते हैं उनकी खूबसूरती ये होती है कि they think that why, WH questions, where, what, who, when, हमेशा उसके दिमाग में होना चाहिए कि किसने ये इजाद किया, किसने कहा, कहाँ से शुरू हुआ, कौन था इसके पीछे, NHW, how। अगर आप ये चीज़ें सोचते हैं, आप दुनिया से बहुत प्यारे लोग हैं, अलग लोग हैं, कि जब आपके दिमाग में होता है कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो कहाँ है, कौन था इसके पीछे, कैसे दुनिया बनी, कब बनी, कितनी हॉट थी, और हम जिस दुनिया में रहने जैसा ख्याल था। और कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट 100% नहीं होती, दैट्स आवर ओपिनियन। दुनिया बनी, ख्याल ये था कि दुनिया एक फ्लैट, साबित हुआ कि दुनिया एक फ्लैट नहीं है, दैट्स एन ऑल शेप। तो अभी फर्दर बहुत सारी रिसर्च है जो हमें हर दिन पता चल रहे हैं, और ये प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं, एंड आई एम डूइंग सम रिसर्च एज वेल these days, like instead of fooling around, not doing, and some other things as well. So I'm going to publish my papers, research papers, and I got 2 books, and I'm author of 2 books. I'm working on 3rd book as well. So you guys can have it, and also I'm gonna explain you something else as well, website or something. So let's go to the clips, and I'm gonna back and forth gonna tell you guys a little bit. And if you guys have any questions, please stop me. Do not hesitate. Again, I give you guys a free hand. You guys are not like a statue. Nah, ask, because that's for you guys. That's what you guys gonna get. I don't have any cars. I don't have any lectures. Okay, write down. Nothing. I'm just two-way traffic talking to you guys for the sake of yourself, right? That's not like a traditional route. Okay, that's you guys. Everybody has to pull out the pen and paper and write down what I'm going to do. And this is the thing. Da 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 da. Yada yada yada. No.
All right, so let's go. All right. Okay, listen to your heart. Stay true to your feelings when you make decision. Somebody asked, and that was the hot topic. And somebody asked that question: how to make a decision. So listen to your heart, what it tells you, and that's your basic instinct and intuition. Your antennas tell you, no, don't go there. No, I'm not gonna go. It's your basic instinct, that's your intuition. It tells you, I don't need to see that, what's going on up there. Get out of here as soon as possible, right? So always listen to your heart, and trust me, it works 100 times. Because if you go somewhere and you do not say, don't need to stay there. If you go something and you feel, very comfy, and I'm very comfortable, that's a peaceful area. Look at this, trees, birds, chirping, and I'm enjoying. Can we stay here, Dad, all day long? That's such a nice seashore. You feel like to, right? So you feel the positive vibe around. And how it works, we cannot see, but we can only feel. And the feeling is the only thing which we can feel. And we cannot explain in our word. We cannot measure it. We do not have any scale. How do you feel? I'm so happy. Explain it. How much? This much happy? This much happy? Kilo? 2 kilo? No. I'm so much happy because you are the only one who knows how happy you are. Yes. हम अपने डिसीजन लेते हैं या सुननी चाहिए, लेकिन अगर हम गलत ले रहे हैं तो भी हम दूसरों की ना सुनिए, तो हमारा हमसे एकदम हमें वो बुरा अच्छा लग रहा है, तो फिर इस पे हम क्या कर सकते हैं? Very nice question. Look at her, such a genius. Yeah, how do we know that whether we are taking a right decision or wrong decision, right? We don't know. Okay, listen to your heart. It tells you, it guides you. We don't know whether we are taking right decision or not. Why businessmen are a businessman? Because they have some qualities. They know the work time. Time is running away. Time is running out. And they said, we got to take a decision. I come across with businessmen because my background is not business. That's all education. And my family is all literary, like scientists, professors, doctors, and engineers, name it. That's my family is. So I come across some of my businessmen because I wanted to be an entrepreneur or businessman. And I said, you guys are so smart. You guys take a decision like this. Are you guys pre-calculated or do you have some kind of special calculation? They said, no. We just take decision because we listen to our heart, whether it goes to us or not. And you said whether it's right or wrong. Because other day I was listening some quote, Mr. Jinnah, God has Muhammad Ali Jinnah. He said, I took a decision. What? Say it again. That's correct. Like I took a decision, and after that I make it right. I don't know whether it's right or wrong, but I took a decision, and later on, because the time is running away, it's not going to wait for you. You got to take a decision. That's why the businessman is businessman. The ship is sinking, and the captain's job is to take a decision how to save them. And if you're not going to say, I took a wrong decision, we got to take a decision right now, right? So later on, you can make it better, you can make it right, and that's the beauty. But the fear factor, because I'm not a businessman, I'm going to put that much money in this business? Never going to be a businessman. That's what you had. Like somebody asked Donald Trump a question. Somebody's taking his interview and said, how come you became a billionaire just in a decade or two? He said, you know what? Because I was thinking different. And I have some dream, vision. So everybody, if you're going to open it, everybody. And these are the secret. And he said, what is the secret? Because what we studied in Harvard University. He said, what I'm going to teach you, which teachers didn't teach in Harvard University's students. So like the people say that, okay, we're going to listen because you become a very rich guy. And he said, what is this path or secret? He said, location. There are three keys. He said, first, location,
and location for any business, for anything. So at some points we should understand. And then because he's a constructor and he designed so many buildings and a lot of things like that, so he knows the word of location. All right? Claire, any doubt? Sure, positive, everybody? Because she asked a very good question, and that was really tacky. But I told you, you gotta take a decision and make it right. Because if you guys gonna keep thinking, then you're never gonna get a decision, never gonna take a decision, never gonna put your foot forward, because be stagnant is death. But we have to keep moving forward. Put your best foot forward. Aha! And say to yourself, because the morning rituals say, if you start your day good, you will end it good. Wake up early in the morning. You have, like a lady was telling me, a young lady, she said she got a very busy schedule and a cycle. So start your day in the early morning. You'll get a long day. Long day in the terms of positive, like you will have so many hours to do a lot of things. Got it? All right. Look at them like a positive energy and nobody wants to go out, huh? That's pretty interesting, isn't it? Yeah. So we are sure nothing is holding us back, and we're not gonna scare of anything, or we're gonna be confident in the terms of what would we like, because you guys have everything, honestly. Nobody's ugly. Everybody's beautiful. Everybody's powerful. Endurance. And that's your mom, dad are requiring you. But live your life, please. Because they told me, I delivered some lectures and seminars in the university and some other different departments as well. And I had a bunch of people and they were throwing a lot of questions. And I was so glad to know that they were asking that questions like you guys asked today. Really amazing questions. And well, I was so amazed anyways. I'm still. So I had some session, and I found some good energy because they were looking for. They had some thirst. Unfortunately, in Pakistan, we do not have motivational or inspirational speakers. That's what we need. We do not have that kind of student counselors, facilitators. They can ask you, yes, young girl, young guy, gentleman, what you want, what you dream, why you are dropping your class, why you are not taking your semester. Let's talk one-on-one. And they do not have, which we needed. And that's what my goal is, my thirst. Allah willing, inshallah, what I'm going to do, I'm going to go to a different university that I'm planning about and just let them know, because you guys need. आप लोगों को समझ में आ रहा है जो if anything is not, please बिल्कुल मुझे रोक दें या बता सकते हैं, ठीक है? नहीं, इसमें कोई शर्मिंदगी मतलब hesitant नहीं होने की ज़रूरत है. Are you guys understand? सच हर चीज़ ठीक है, इसलिए कि हम इस चीज़ को उर्दू में भी ला सकते हैं, ठीक है? इसलिए कि मेरी उर्दू भी बहुत ख़राब नहीं है, तो हम बात कर सकते हैं. अच्छा, अभी और कोई किसी का सवाल है? जी सर, मैम. अगर हम डिसीजन देते हैं तो हम बचपन से ही पेरेंट्स भी उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि ये करना है, वो करना है. फिर हम कहते हैं नहीं, इसका स्कोप ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है. हम तो डिसीजन स्कोप पे ले रहे हैं ना, हम कौन सा अपने दिल की सुन रहे हैं. यही तो बात है ना. देखें, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है. देखिए, मैं समझता हूँ हमारे लिए तमाम लोग बहुत काबिल एहतराम हैं, चाहे वो हमारे उस्ताद हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे बहन भाई हों, हमारे रिलेटिव्स हों या हमारे दोस्त हों. लेकिन आपका अपना दिल क्या कह रहा है, आपका अपना दिमाग क्या कह रहा है. एक मेरी सिस्टर है, शी इज़ लाइक नॉट शी राइडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड. है ना, मैं हमेशा कंप्लेन करता था कि बाजी आप ये तरीका नहीं होता है, दिस इज़ अ वे, राइट वे. एंड आई वाज रियलाइजिंग माय थिंग्स कि आप सीधे हाथ से लिखें और वो उल्टे हाथ से लिखती थी. अब मैं उनको कोशिश करता था, उनसे नहीं होती थी.
अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो सीधे हाथ से लिखें, इसलिए कि मैं उनका भाई हूँ और मैं यही समझता हूँ कि वो सीधे हाथ से लिखें, लेकिन उनका ब्रेन जो है इस पे उनको कंपेल कर रहा था कि उल्टे हाथ से लिखें, बहुत अच्छा लिखती है और शी इज हर ड्राइंग और पेंटिंग इज रियली ऑसम। बिकॉज देखा ये गया है कि जो लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं उनमें एक एस्थेटिक सेंस होता है, एक आर्ट होता है, दे आर आर्टिस्ट, हमेशा देखा गया। बहरहाल आप लोग जिस मैं इनके क्वेश्चन के साथ एक चीज़ और ऐड करूँ, वो जी। ये कि जैसे उन्होंने कहा कि हम जो डिसीजन करते हैं वो स्कूल की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। बच्चों ने डिसीजन कर लिया, पेरेंट्स ने डिसीजन कर लिया कि जी ये स्कोप है और ये करना, और एट दी एंड क्या हुआ कि जो स्कोप पे डिसीजन हुआ वो स्कोप भी नहीं मिला। देखें, that's the biggest thing, you know what Dr. Aisha said, she was saying, because if you're going to listen to your heart, it not lies, it doesn't lie, it tells you the truth. हमने 20 मरतबा ये बात सुनी है कि आप क्या चाहते हैं। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, मैंने सोचा, मैंने ख्याल किया, और इस तरह हम मेरी पूरी एक टीम है, पीटर है, रैंडल है, सारा, इसके अलावा मोहम्मद गफ़ार है, मरियम है, हमारी पूरी टीम है और हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं ना। आप लीडिंग them। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि देखिए आपसे यहाँ डिपार्टमेंट में जब एडमिशन हुआ, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं जिनका डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ, कितने ऐसे हैं जो डिज़ायर थे यहाँ के एडमिशन के? बहुत खूबसूरत सवाल। देखें मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने एग्रीकल्चर में भी अपना सेमिनार कंडक्ट किया और यही सवाल पूछा गया था जो मैडम ने इस वक्त अभी पूछा है। वहाँ इंडिविजुअली चेयरमैन साहब ने यही पूछा था ओरिएंटेशन क्लास में, and I was there too as a guest speaker because that's my job to motivate them because they were bunking classes and they were not interested to, and I said like, they are paying that much money and they are, it doesn't make sense to me because I came from a different part of the world and what we were doing, so हमने अपने सेमेस्टर हम ड्रॉप करते हैं इसलिए कि पैसे नहीं दे सकते वहाँ जो हमें देने होते हैं। पूरे सेमेस्टर ड्रॉप करने के बाद मैकडॉनल्ड पे, पिज़्ज़ा हट पे, इस पे मैंने काम किया। I did it just for my tuition fee and I dropped the whole semester for 6 months, 4 months, whatever so. And I came back, I had money, and I said like, this much money, मुझे भी continue करना है। Then I feel the pain because I worked hard and I felt it, I made that much money for my studies. How many of you guys एक आम सी बात करते हैं, आप लोग ट्यूशन कर रहे हैं या कोई और रिसोर्सेज है आप लोगों के पास? कितने? प्लीज बड़ा सारा हाथ खड़ा करें। Oh, very nice, excellent. Swear to God, honest to God, I'm so happy and everybody's happy, like your friends as well, because that's the most appreciating thing. You are making money and you are spending it and getting it from your pocket by using some resources. That's really appreciated. बाकी जो है हम लोग वो भी सही है, I don't say anything, but हमारे पेरेंट्स हमें पे कर रहे हैं हमारी ट्यूशन, है ना? कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, या somebody else। जब भी मैंने कमाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस मुश्किल है सेमेस्टर को पढ़ना और ख़त्म करना। Then I started thinking, और उसके बाद मैंने आज था in Texas University as well। अच्छा हमारे पास होता था कि हम we give them a free hand, they can bring their coffee, muffins, chewing, laces out, I don't mind, come inside. So we usually say that because I say like आप यहाँ पे मेरा लेक्चर लेने के लिए I respect you and you are here not to miss class। तो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कहेंगे कि ये बंक करते हैं क्लासेस, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये पैसे भी दे रहे हैं इनके माँ बाप और कदर नहीं है। मैंने कहा आप लोग कमाते हैं नहीं कमाते, or somebody else's, your parents are supporting you to pay your tuition fee. I'm so sad. And you are not taking classes, you should, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैडम ने कहा कि आप लोग हैं यहाँ पे, देखिए अगर आप बॉटनी में हैं तो सोचें कि इससे सबसे ज़्यादा हम कैसे ले सकते हैं। आप लोगों ने सोचा कि आप लोग हॉर्टिकल्चरस भी बन सकते हैं। आप लोग जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है? कोई नहीं? हाँ अच्छा खैर जनाब, ये बागबानी और फूल पौधे सजावट जो हम देखते हैं ऑर्नामेंटल,
प्लांट्स होते हैं ना, नर्सरी से खरीद के लाते हैं, और देखें ये लोग चला रहे हैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के, कोई बॉटनी में कोई हॉर्टिकल्चर वगैरह नहीं पढ़ा है, लेकिन किस खूबी से चला रहे हैं माली लोग, है ना। और आप लोग पढ़े लिखे होकर अगर ये काम करें, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी ने ये तो रोका तो नहीं कि आपने अगर पढ़ा है तो आप सारी ज़िंदगी किसी के लिए काम करें। जैसे एक खूबसूरत चीज़ है, build your dream, otherwise somebody will hire you to build theirs. Got it? So build your dream. अगर आप business man, women, person बनना चाहते हैं, then go for it. And how to? अच्छा, आमतौर पे हम कंप्लेन करते हैं, जैसे कंप्लेन है, I said like stop complaining, stop crying, stop accusing yourself, stop insulting yourself. You are the best out of the best. Say it again, I'm beautiful, I'm powerful, I can do what I'm dreaming about. उसमें ये चीज़ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, ड्रीमिंग करते हैं। इसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटी की बात करें, if you're going to talk about the opportunity, okay, if you're going to wait for opportunity, most of us, we always complain about, I couldn't find any opportunity, that's why I'm here. And you know what? She was the stumbling block in my life, and he was a stumbling block in my life. Stumbling, bumbling, complaining, crying. Look, well, roll in my eyes. Stop complaining. If you can't find any opportunity, create it. Create it. And that's up to you, guys. How do you create it? For instance, put it this way. Agriculture. How do you guys know about botany? Okay, we are studying botany because I want to get my degree. After getting my degree, I said, ta-ta. Oh, I got my degree. What else I need? That's what I came for. That's what I was dreaming about. अच्छा, ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो आपको आप देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर आदमी के अपने पैमाना होता है। जो ड्रीम आप देख रहे हैं वो बड़ा है, वो आपका है सबसे खूबसूरत। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। कैसे आप उसको मेजर करेंगे? ये छोटा ड्रीम है, पहले मैं ये कर लूँ। हर कोई ड्रीम, और ड्रीम की कोई क्या हद नहीं होती है। आप अपने आप को देखें, अगर आप फील करते हैं कि यू आर प्रिंसेस विक्टोरिया, व्हाटएवर यू आर, आप अपने आप को देखते हैं कि मैं जहाज उड़ा सकता हूँ या उड़ा सकती हूँ, आप उड़ा सकते हैं। तो किसी ने कह तो नहीं किया कि आप बड़ा कैनवस पे अपने आप को बड़ा देखें, बड़ा सोचें। Go for it. Correct? All right. अच्छा, दूसरा ये good. तो एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा था कि बात हो रही है सोचने की, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। मतलब वो चूँकि शायद वो आसान भी है और वो थोड़ा सा जो है वो एडमायर भी करती है, अट्रैक्ट भी करती है। Guys, please do me a favor. सोचें ज़रूर, बहुत सा सोचें, बड़ा सोचें, पॉजिटिव। Here we go. Think positive. All right. That's kind of positive vibe. I can see that. Big hand for you guys as well. All right. So as he said, this gentleman, like, absolutely correct. All right. So think big and make it possible. Because if you're going to be stagnant in certain prompt, do not draw your boundary, because the lady, she said, I got a very hectic a schedule and a cycle schedule, keep doing the same kind of thing, and now what you're going to do? You're going to get bored, ultimately. So do not draw a circle to be habitual. Keep doing the same kind of chores again and again. Increase your horizons. Because if you're going to draw a circle, इसलिए कि मैं फार्मर इसलिए हूँ, अगर कोई कहता है इसलिए कि मेरे वालिद साहब और उनके वालिद साहब और उनके वालिद साहब फार्मर थे, इसलिए मैं फार्मर हूँ। मैं हवलदार इसलिए हूँ कि मेरे दादा, परदादा, वालिद जी सब थे, इसलिए मैं हूँ ना। आप कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ से इसको खोलना है, ठीक है? Keep dreaming and go for it. तो थोड़ा सा हम इसके लिए, never give up on what you really want to do. The person with the big dream is more powerful than one with all the facts. ठीक है, facts जमा नहीं करें। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मॉल,
Don't. Those are all information, not knowledge. There's a big difference between information and knowledge, let me tell you. Information which you are getting from the internet, oh, how many countries, how many people, da 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 da. These are the information. But the knowledge is something else. That's your own creation. That's your own creation. I learned this. And how do you enhance, enlarge, how to make it big? What's your opinion? What do you think? And you think that, okay, 2 and 2, 4, that might be 3. Why not 3? Why not 5? That's a pre-calculation. And this thing, if you're going to find out something new, and you're going to give us, and then you can say that I'm knowledgeable because I know about that. I wrote 2 books, and I'm the author. And people, my friend, they consider me like, oh, you're Mr. Author. You must know about that. That's why you wrote it down. Whole book. That's what we call it, because I understand. I'm talking to you guys. I'm sharing my secrets. I'm sharing the world truth secrets. Why? For the sake of you. Because you guys are not going to pay me. Of course not. I'm burning the midnight oil just because I would like everybody of you, tomorrow, you will be here in the success, and we can proudly say your relatives, your family, and everybody. But there is somebody who guided you. Don't give up. Never give up on your dream, on your life, on your success. It leads to success. Everybody wants to be a successful. And how it's possible? We heard a lot, as he said and you said, and there are different people. Positive and negative. Again, there is a very thin line between positive and negative. A criminal, a person who is convicted in crime and a murderer, he thinks that to kill somebody, that's according to his book or his knowledge, being positive. And he said, I'm so proud to kill people. Does it make sense? Of course not. We gotta figure it out. To do good thing or the bad thing. That's again, it's a very thin line. If you feel, because again, एक खूबसूरत बात ये एक ऐसा जज्बा है जिसे हम बार-बार कहते हैं फील एहसास। आप लोगों ने महसूस किया होगा किसी को हम जब पैसे देते हैं किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को और वो खुशी हम जो महसूस करते हैं किसी की मदद पलट के भी नहीं देखते कहते हैं बाबा खा लेना कुछ रोटी लेना किसी को अपने पैसे दे के जो सबसे ज़्यादा हम अपने पास रखना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद आहा फीलिंग होती है आहा उसका कोई नेमल बदल नहीं है तो वो फीलिंग है जो आप किसी को अपने पैसे दे रहे हैं जो हम हमेशा रखने चाहते हैं तो ये इस तरह के एहसास हैं जो होने चाहिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव को करते हैं जैसे झूठ और सच कैसे किसी ने हमसे कहा कि भाई हमारे दादा परदादा जो हैं वो तो जाहिल बन के डोंट से दैट अनपढ़ ज़रूर थे लेकिन जाहिल नहीं थे इसलिए कि उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क पता था सच और झूठ में फ़र्क पता था नेकी और बदी में फ़र्क पता था ऐसा आदमी कैसे जाहिल हो सकता है जाहिल हम उसे कहते हैं जाहिलों के पाप को अब जाओ I'm sorry but that's the kind of thing right a person who doesn't know like he doesn't want it to know anything but we guys know everything we have that God give you हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं Are we on the same page or it becomes so boring? Tell me. Whew. Any questions, guys? No? All right. So we're going to go through a little faster. Huh. All right. Free time? Okay, you guys are going to get you. Okay, just we're going to go through it if you got time. If you wait for perfect condition, you will never get anything done. So nothing is perfect. Don't wait. Time is running out. Time is running away. Do it. What you have right now. That's the most precious thing. All right? Go ahead, please. Never been a good day about thinking about that yesterday. What happened yesterday? It's gone. Don't cry over spilled milk. You have today the most precious thing. Make it best. All right? All right. These are really, really, really important. 12 steps for self-care. If it feels wrong, don't do it. We already spoke about that. That's your intuition will tell you, oh, there's something wrong. I'm not going to be here. I'm going to get out. Say exactly what you mean. Never get scared to ask questions. Say what it feels like.
But worst come to the worst. Say exactly what you mean. Don't put buttering on it. No, no flattering, nothing. Say exactly what you mean. Oh, that's what I mean. Okay. Don't be a people pleaser. मैं आपको खुश करने के लिए आप जनाब be to what you feel like, but do not cross the border, please. Be a good lady and gentleman, but do not be pleaser for to kill yourself. No, never. All right. Trust your instincts. Again, what it says. That's the most important thing, because that's a gut feeling. It tells you. Instincts means your basic instincts. Being a human, we know that. ये चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए. Never speak bad about yourself. Again, do not say anything bad about you. I can't do it. I don't have energy. I don't have this, and I'm not good on it. No. It reflects. Echo. Life is an echo. It comes back and reflects to you. All right? Perfect. Never speak bad about yourself. Never give up on your dreams. Never give up. Never ever. Don't be afraid to say no. On the top he said, say exactly what you mean. And don't be afraid to say no if you don't feel like good. Like, oh, that's not, I don't want to do that. No. Say no. Don't need to say a lot of stories. No. Exactly, say no. But you know what? Gently, like politely, and don't afraid to say yes. Would you like to eat something? And you are hungry and you said, no. Say yes. Yes, I'm hungry. Would you like to buy my food? Okay, I'm gonna buy yours. And be kind to yourself. Everybody knows you being a smart people around here. Be kind to yourself. Always be kind. Because pat on your back, you did a good job. You look so good today. Pretty much energetic. You can do whatever you feel like to do. So be kind to yourself. Never say anything bad about you. Let go of what you can't control. If you have something which you out of control, let it go. Instead of keep thinking, oh, I wish I would have, I could have. I have only $10, 10 rupee, 20 rupee, whatever. Stay away from any drama and negativity. If you find any surrounding, people are talking about them, leave in them lurch. Leave in them lurch. And they say, okay, you know what? I gotta go. I don't have time for this. Be polite, but for yourself. Because if you're gonna keep staying there, keep listening, what's gonna happen the rest of the day? You're gonna say, I kill myself. I should. Because why I wasted like 20 minutes or 30 minutes to listen to that kind of stuff? And it goes, they were bombarding against me, my friends or so and so, whatever it's called. So, again, I stay away from any drama and negativity. If you find any drama queen or drama, any kind of thing, stay away. All right? And love, spread love. Yourself, your mom, your dad. How many times, you guys, let me ask you, Mother Day, I know, Dad, Father Day, but to be honest with you, when did you say last time to your mom, Mom, I'm going to give you a hug, big hug, and I'm going to say, I really love you. Every day? No? How many times? Very good, very good. Because that's the most thing we take it as for granted. Because she's my mom, she's my dad. There's no need to tell her, here's my brother, here's my sister, she's my sister. That's obvious. I love them. They love me. I love my mom. She loves me. But you know what? Just try it. Go home. Trust me. Because I know everybody loves their mom, right? Go home and give her a big hug and express your feeling. Mom, I couldn't get the chance so far to tell you how much I love you. And just in a megasecond, in an hour or so, you will see that in your mom's face. She said, you don't need to let me know. You don't need to tell me. But you can feel it. So love yourself. Love to your surrounding. What you have, like a surrounding, nature, please, praise. That's the most important. That's always give you positive vibe. Can we go further, please?
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. So be a good listener. Be a good listener, and that's really true. All right, go ahead. So try to understand what somebody's saying instead of replying, I have to say something. No. Aha! Okay, that's really good. Laugh until your belly hurts and then just a bit more, because that's a positive thing. And you will feel energy like you guys are laughing. That's very good. Go ahead, please. Go, Father. What up? Go ahead. Okay, happiness can be found everywhere and in everything, or not. So choice is yours. You can find in your surrounding anything. What you create, you get it. Because that's the most beautiful creature is human and our nature. Always. I'm so into nature. It fascinates me a lot. All right, go ahead, please. Okay, we don't see the things as they are. We see things as we are. He's a bad guy. He's a bad girl. She's ugly. She's good. She's not. It reflects again. Everybody's beautiful. Everybody's good. Okay, go please. So always, that's kind of like the positive and negative thing. That's all. That was the monkey's thing. Once you become consciously aware of just how powerful your thoughts are, you will realize everything in your life is exactly how you allow to be. That's kind of like kind of hard not to break or hard to understand, I would say. It's some kind of philosophical, but what you think, in other words, I'll put it this way. If you consciously allow yourself, or you think that you are the master of this thing and you like to do that, you are what you think. All right, go ahead, please. All right, go ahead, please. Do not react the same way, please. Because of tolerance and passion. Would you like, very good and important question. Just focus. Would you like if you met you, I spent like 70 years and I'm going to die. Lastly, you're going to say, oh, I had a very good life, but I couldn't make it. I wish I could do so. अगर आपकी मुलाकात आपसे ही हो जाए कभी मुस्तकबिल में, तो क्या आप उसको मुस्कुरा के वेलकम करेंगे कि आपने कोई बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए, या कोई एक काम किया जिस पे आप फ़ख्र से कह सकें कि हाँ मैं अपने आप से मिलकर खुश हो रहा हूँ, दैट्स मी। तो याद रखें, हम जिस मकसद के लिए जो आपके दिमाग में ख्वाब हैं, जो आप करना चाहते हैं, करें। अगर आप अपने आप से मिलें कभी, तो आपको खुशी से आप इंट्रोड्यूस करा सकें कि ये मैं हूँ। Right? All right, go to another thing. Life is really simple, but we insist on making it complicated. Life is so simple, we know that, don't we? And anybody knows about Confucius? And you guys have some department or sort of thing I saw in somewhere in another department. Do you guys know about that? Confucius? He was a philosopher, a scholar, way back, somewhere in China. And that's what he said, I quoted earlier, if you want to be successful, it does not matter. That's what he said. It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. That's what he said. And I would really, really like this guy, Confucius. He was a Chinese somewhere. Go ahead, please. So life is simple. Do not make it complicated. All right, that's another good thing. Being happy doesn't mean you have it all. It means being thankful for all you have. So what you have, sometimes we say, as you guys use very, very often, something is better than nothing. All right? All right, all right. So something is better than nothing. In other words, bad is the best. What you have right now, currently, that is the best out of anything. Like a bird in a hand is better than two in a bush. What you have, present condition, situation, circumstances. I don't have much money. I wish I would have that much money. Then I can buy a necklace. Then I can buy a car. And then I can buy a Bungalow or something. But what you have, praise about it. And try to put your best foot forward to make it better. But I always say that, okay, because you know what, that's two things. Count your blessings, not sufferings. Always
Count your blessings. I'm so blessed. As I said when I started my speech, as I said, I'm so honored and privileged, and it blew me away. The department, the university gave me the chance. And I'm here to share my knowledge with you guys and share this from the both sides. Because I'm learning as well. I'm not. That's not a one-way traffic. All right? All right, go ahead, please. All right, you got a few seconds to find out the mistake. Let me see how smart you are. Find out the mistake. Close it. Close it. What was that? Who's that? All right. Who else? All right. Be confident. That's a success. All right. Good. Who else? You? Nope. Who else? Okay. Let me show you again. Find the mistake. Oh, I cannot hear. Because don't say at once, everybody. Did you guys figure out? Read it one more time. That's just a game, a mind game. If you guys gonna say it like that, I cannot understand at once. Everybody's saying. All right, one after one. Just raise your hand, so I will get your answer. Anybody? All right. Yes, young lady, say what's that? Best spring in the New York. Pardon me? Best spring in the New York. In the New York? So what's wrong with it? New York in the spring? What was that? What? That is spring in the New York. I can't hear you. That is spring in the New York. So that's the right sentence. Nothing wrong with it. Duh, spring in the New York. All right, who else? The reputation of the. What? The reputation of the. Okay. What? Who else? Who else? Are you guys agree? Did you find anybody? No? All right. This lady, she said right. Did you guys notice here? It looks so New York in the spring. But look at here. All right. Now look at here. 2. All right. I had a hard time. Like I read it 7 times. And I was like, that sounds good. That's okay. Well, nothing wrong with it. And I'll go after triangle and blah, 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 blah. And finally I figured out, oh, there's something out there. Go ahead, please. Okay, that's another good thing. Guys, please, I want your attention. 3 simple rules in life. If you do not go after what you want, you will never have it. You will never have it. What you want, always go for it. जो आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसके पीछे लग जाएं तो उनमें. अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करनी है, आज से लग जाएं. There is no tomorrow. Tomorrow never comes. अगर आपने प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, पूछें उनसे. और ये आप लोगों के लिए इतने अच्छे लोग हैं कि तैयार हैं हर वक्त आप लोगों के जवाब देने के लिए. लेकिन ये कहते हैं आए तो सही, पूछें तो सही. पूरे ये इनके देखिए टीचर की खूबसूरती यही होती है. उसने यही चीज़ सीखी होती है कि वो जो जानता है वो ट्रांसफ़र करते हैं. तो प्लीज़ आप जो भी चाहें पढ़ करें. आप लोगों को आज रिसर्च लेना है. हो सकता है कि आपको 3-4 साल ना गुजारने पड़े यहाँ पे. जब 4 साल आप गुजारें तो आपकी तो एमफिल कंप्लीट हुई भी हो. दैट्स द टाइम टू सबमिट इट. और उस वक्त लोग जाके एनरोल कराते हैं एमफिल में. तो यू कैन सेव योर टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग. एवरी डे कम आस्क दिस गाइस, हमें आप कोई ज़मीन दे दें, हमें कोई प्रोजेक्ट दे दें, हमने करना है. अगर आप ख्वाहिशमंद हैं इस चीज़ की, जिस चीज़ के, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड गो फॉर इट. और मुझे खुशी है कि हमारे लेक्चर जो हैं हमने डिलीवर किए हैं कुछ और डिपार्टमेंट में. और उन्होंने खास करके चेयरपर्सन के पास जाके प्रोजेक्ट्स लिए हैं और वो काम कर रहे हैं. और टीचर दे आर सो हैप्पी कि उनके अंदर एक नया जज्बा आया करने का. सोचें अगर आपके रिसर्च पेपर्स छपेंगे पूरी दुनिया में कि फला के नाम से, आप अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं, दोस्तों को भी. आई डिड सम रिसर्च फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ, फॉर माई हैप्पीनेस. हाउ ब्यूटीफुल इज. ठीक है? आर वी गुड? ऑलराइट. सो if you do not go after what you want, you will never have it.
if you do not ask, the answer will always be no. Guys, if you do not ask, the answer will always be no. आपने पूछा ही नहीं तो उसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं. So always ask. I encourage you, right? Questions and questions. If you do not step forward, you will always be in the same place. तो रिस्क की बात हो रही थी, तो हमें स्टेप तो लेना पड़ेगा. 50% चांसेस तो इंक्रीज हो गए. कि लगा तो शक्का, नहीं लगा तो कोई दुख नहीं. I took a risk. I stepped forward, but I'm not stagnant. I was not before where I was. Right? Go ahead, please. Are you getting my point? Is that good? Interesting? Just give me a quick feedback. Is that? Or just I'm holding you? Because you guys are allowed, to be honest. I'm not holding you back. If you guys wanted to go anywhere, anytime you can go anywhere to grab your drink, coffee, water. That's not like or go to the men's or women, whatever. Train your mind to set the good in every situation. Train your mind to find good in every situation. So if you're going to train it, like we train cats and other things, so train it that way. Go ahead, please. So train your mind to get everything positive. And this is really important, please. If you can't figure out your purpose, figure out your passion, or your passion will lead you to rise into your purpose. Already we discussed it before, didn't we? Right? So find your purpose and your passion will lead you. Go ahead, please. Aha! That's kind of funny. Look at that. That's the people you will come across every single day. Because, oh, you know what? The situation was worse. And there were people out there and they were stopping me. Da 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 da. Okay, look at here. You are here. And this is a goal which you want to achieve. And what are the people? First, your friends. They're stopping you. No, 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 don't go. That's all funny idea. Who else? Then, first were relatives. Your close relatives. They said no. You know what? That's all funny idea. Don't know what. Think about it. Friends and pessimists. Like they always give up. They said no, no. And they're going to say it to you as well. In society, guilt and fear. These were the things, right, we were talking about. And finally, you're going to get to the goal. And you know what? Let me tell you. If you're going to look into this, friends, guilt, fear, relatives, and pessimists, you would never hit the goal. You never hit the bullseye. Why? Because you are focusing yourself here, 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 and you're not looking into your goal. So if you have goal, do not see barriers. Do not see those barriers. See the goal. If you're going to see the barriers and bumps and obstacle, you're going to keep focusing on obstacle, barriers, this, and goal is right here. So keep focusing. Focusing is really important. I'm walking, whoever is there, I don't care. I don't care. I don't care. Just walking. That's the way. All right? So always focus. What is your goal? And do not focus, do not even divert. Because what we usually guys do, because usually we said, sorry for interruption, I didn't mean it to cut to you. Well, I'm sorry. Don't get me wrong. But that's what we usually say, right? But what we say, because sometimes we talk, like two guys talking, and the third person wanted to get his or her attention. Oh yeah, that's right, that's right, that's right. We never put our ear on the third person. Because this gentleman is more important because I'm talking to him, and this is the way it should be, right? So do not divert, do not allow your attention to be diverted. Sir, Who? आपको बोल पे हम सीधा किसी को ना देखें और चलते हैं तो आंखें बंद करके बोल तो पूरी चीज करना है. ये जो हमारे बीच में इतनी सारी रिलेटेड है सारे तो इन सबको भी तो हमें बोल हम इन्हीं के दरमियान ही तो आएंगे वापस. देखें, मैं आपको बताता हूँ. इनके पास वापस आएंगे, इनके साथ ही रहना है, इसी माशरे में रहना है, ऐसे ही जीना है. Those are excuses. If you want to do something,
you will find a way. If you don't, then you will find an excuse. तो होता है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो ख्वाब देखते हैं, आप उसे पा लेते हैं, और अगर आप नहीं पाते तो आप क्या पाते हैं? एक्सक्यूज़ेस. तो आपने जैसे बात की कि रिलेटिव्स और दूसरे लोग हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, आप अपने साथ सच हैं. आप क्या सोचें? ज़ाहिर आप कोई बुरी बात तो नहीं सोच रहे किसी के लिए, ये अपने लिए आप एक अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, और ये चीज़ें मौजूद हैं अपनी जगह पे और रहेंगी. लेकिन मेरा ड्रीम ये, मुझे ये बनना है, उसमें जो भी मुश्किलात आएँ मुझे वो बनना है, और ये लोग अलग नहीं होंगे, और मैं उनसे जुदा भी नहीं हो रहा या नहीं हो रही. इनको नहीं कन्विंस अपने आप को करना पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या देखती हूँ. आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी को भी नुकसान. मैं आपकी मतलब समझ रहा हूँ कि कन्विंस करने के कि हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी और कल्चर, जैसे नो यू कैन डू इट. एक हमारे यहाँ खातून जो हैं वो पहाड़ पे चढ़ गई, क्योंकि तो हमजा पे, ठीक है ना, उन्होंने रैकेट बनाया, और बहुत रिमोट एरिया से और बहुत एथनिक बैकग्राउंड था, लेकिन उसके बावजूद उस बेचारी बच्ची ने अपने भाई के साथ कुछ हद तक दूर तक गई, और उसने पहाड़ सरी. आज पूरी दुनिया में उसको, उन्होंने दे आस्क्ड फॉर सम फंडिंग, सब ने कोल्ड शोल्डर दे दिया, बट फाइनली दे डिड इट. गवर्नमेंट ने उसे फंड किया है. दुनिया में भी आज नाम है, डेनमार्क से, स्विट्ज़रलैंड से, हर लोगों ने उसको अपने शूज़, अपने क्लोथिंग सब कुछ भेजी, सब इसलिए कि उसका ड्रीम था. अगर हमारी गवर्नमेंट या हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये खूबसूरती है आपके सोचने की और ड्रीम करने की. यू विल गेट समथिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और उसने किसी को हर्ट नहीं किया. आज उसके पाकिस्तान की पहली खातून है, आज पूरी दुनिया में उसका नाम लिया जाता है. व्हाट एल्स यू नीड? और कोई भी बुरा नहीं कह रहा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. सो दैट्स व्हाट आई मीन. प्लीज गो अहेड. You never know how close you are. How close you are. Never give up on your dreams. Look at this. ठीक है? तो ये सिचुएशन हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा आती है कि हम इस कदर करीब होते हैं, इतनी सी वॉल बाकी होती है, हम कहते हैं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, और वहाँ से हम वापस लौट जाते हैं. तो जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट शॉट. गो अहेड प्लीज. नेक्स्ट. सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए हैं कि अगर देखें, आप लोगों में से कुछ लोग, और दुआ आई विश, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग सारे तरक्की की उस मयार में पहुँच जाएँ, या आप लोग जो सोचते हैं वो पहुँच जाए. लेकिन अगर मैं आप में से कुछ लोग, 4, 5, 6 लोग, वरस आए उस जगह से जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया या सीखना शुरू किया, उस जगह आई एम बैक इन टाउन एंड द सेम यूनिवर्सिटी, द सेम डिपार्टमेंट, है ना. मैं अगर यहाँ से कुछ लोग और बन जाते हैं कुछ भी, कितनी ज़्यादा खुशी होगी उन टीचर्स के लिए, उन लोगों के लिए. और बीइंग अ मेंटर. अच्छा, एक और खूबसूरत बात है कि ज़रूरी नहीं है जो आप सब कुछ सोच रहे हैं, बात हमें ज़रूरत होती है, हम क्यों अपने टीचरों से पढ़ते हैं, हम क्यों किसी किताबें काफ़ी नहीं दी, लेकिन हमें टीचर्स चाहिए होते हैं समझाने के लिए. इसी तरह से मेंटर होते हैं. बीइंग अ मेंटर, दैट्स माय जॉब. काउंसलिंग भी 1-on-1 करता हूँ, लेकिन इस तरह के लेक्चर, सेमिनार आप अपने रिश्तेदारों में, अपने टीचरों में, अपने पेरेंट्स में, अपने भाई बहनों में, जो आप समझते हैं कि बेस्ट कोई समझदार इंसान है जिसे आप शेयर कर सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसे हम कहते हैं मेंटर. और वो जो आपको सही गाइड कर सके, और अगर आपको लगे कि वो सही गाइड नहीं कर रहा है, so it doesn't mean, or it means he or she is not a right mentor, because mentor means वो आपको बताता है कि how to walk, how to talk, how to get your target. All right, go ahead please. Don't wait for opportunity, create it. हम कंप्लेन करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, काश एक मौका मिल जाता, काश ऐसा होता. अपनी अपॉर्चुनिटी बनाएं. अभी हम बॉटनी पे बात कर रहे थे, हॉर्टिकल्चर के बारे में कितने लोग जानते हैं, एग्रोनॉमी के बारे में कितने लोग जानते हैं, एग्री बिजनेस के बारे में कितने लोग जानते हैं. अरे साहब, MBA करने निकल जाते हैं. अगर आप इस MBA को एग्री बिजनेस में मर्ज करते हैं तो सोचें कि आपने तो बॉटनी भी पढ़ा हुआ है और MBA भी कर लिया है, बिजनेस भी. अब आप जिस तरह से एग्री बिजनेस में कंसल्टेंसी करेंगे, कोई और कर सकता है. आपने अपनी जगह बना ली. आपके पास मोलेकुलर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, DNA RNA में काम हो रहा है, सीक्वेंसिंग, बहुत सारी चीजें इसी जगह पे यूनिवर्सिटी में
माइकोलॉजी है, बड़ा रिसर्च हो रहा है। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 5% हम फंगस फाइंड आउट कर पाए हैं, सिर्फ 5%, और वो मिलियंस की तादाद में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो आप अगर ये सोचेंगे कि आफ्टर गेटिंग माई डिग्री, आमतौर पे ये ख्याल होता है कि व्हाट वी गोना डू आफ्टर गेटिंग आवर डिग्री, बिकॉज देयर इज नो स्कोप इन दिस, I'm just going to get my degree, and that's the most biggest frustration in my mind. What I'm going to do? And you sometimes people say that, oh, you took a wrong department. It doesn't have any value. But you're going to create, as I say, find out, figure it out. How can I multiply, amplify my energy, power, and education? Right? आप fertilizer से बात कर सकते हैं. आप अपना fertilizer बना सकते हैं. एग्रीकल्चर में, पैरासिटोलॉजी में, एलजी में, कौन सी चीज़, केमिस्ट्री में, हर चीज़ मोस्टली ड्राइव हो रही है प्लांट और एनिमल से। मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर, अपना घर सजाए, इतना बड़ा बिजनेस पड़ा हुआ है, लोग नहीं कर रहे हॉर्टिकल्चर में। एक पढ़ा लिखा इंसान, अगर आप लोग किसी पौधे को सजाएंगे, उसकी सीडलिंग बनाएंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो बिजनेस कितना फ्लोरिश करेगा, कितना खूबसूरत जाएगा। अगर आप एक एग्रीकल्चर को, ज़राअत को बताएंगे कि खुद एग्रो बिजनेस होता क्या है, एग्रीकल्चर होता क्या है, बॉटनी के साथ मर्ज करके, हम तासुर ये समझते हैं कि बॉटनी पढ़ के हमसे कोई पूछेगा इस प्लांट का नाम क्या है, और हमें तो उस प्लांट का नाम भी याद नहीं। यही एक तासुर है कि हम शायद लोगों को यही बताते रहेंगे कि पौधों के नाम बताते रहिए सब, और वो हमें याद भी नहीं होता, इसलिए कि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वैसे well, go to the next सब ब्यूटीफुल। ये क्या चीज़ है, कोई बताएगा मुझे प्लीज? Who else? क्या चीज़ है ये? What technology? What we call it? Bonsai painting. Bullseye? What? Bonsai. All right, great. Okay, I like that. अच्छा, पता है क्या, ये देखें, इसे हम मिनिएचर कहते हैं, बॉन्साई। इतने से पौधे होते हैं, जापानीज टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से पौधे होते हैं, और घर में आई हैव few at my home, really I have some, because अभी भी मेरे पास बड़े सारे पौधे I collected and I like it. Anyways, so ये सारे बॉन्साई, ये एक टेक्नोलॉजी, देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत, पूरा बड़ा दरख्त है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इतने से पॉट में रखते हैं, आप लोग अपने घर को सजा सकते हैं। कोई भी मिलने वाला आएगा, ओके, वाओ, like you guys amazed, wow, it's so beautiful, it has some fruit as well, right? तो प्लीज, ये हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, और दूसरी टेक्नोलॉजी में आता है बॉन्साई टेक्नोलॉजी कहलाती है। अच्छा, ये देखें आप लोग, अगर हम यहाँ पे क्रॉल कर रहे हैं, being what you call it, caterpillar, and then tomorrow, right? And don't lose hope. You never know what tomorrow will bring. So never lose hope. Never give up on your aim. Next goal, please. Read it one more time. Surround yourself with the dreamers and the doers, the believers and the thinkers, but most of all, surround yourself with those who see greatness within you, even when you don't see it yourself. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चीज़ हम कहते हैं ना, हमारे मिलने वाले भी उसी तरह से होते हैं, इसलिए कि हर इंसान के अंदर से एक पॉजिटिव वाइब एनर्जी निकल रही थी, और हम खुद महसूस करते हैं इस चीज़ के। अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है, मुसलसल कंटिन्यूसली कर रहा है और बिला वजह, then after a few minutes you say, you know what, I'm not comfortable here, I need to go. Because why should I sit here? So try to be among the doers and positive people. Go ahead, please. Every single day you make a choice. What's the difference? Can anybody? Why? Can anybody tell me? Anybody? No, I'm not going to give you the chance. You said so many times. Go ahead. Go ahead. कौन क्या है, फिर से बता रहे हैं? इस साइड पे वो मतलब वो सोच ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा है अपना, लेकिन वो किसी चीज़ को फाइंड कर रहा है, वहाँ पे चूज कर रहा है। अच्छा, very good. Anybody else? All right. Anybody else?
अच्छा अच्छा wow all right who else anybody come on share ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को शेयर करनी चाहिए जो भी आप सोचते हैं जी जो भी आप सोचते हैं pardon सर वो कलर अपनी लाइफ अच्छा, को हाँ। वो जो है वो ऐसे अच्छा चलो ठीक है लेकिन बहुत खुशी हुई और अच्छी बात है आप लोगों के अच्छे व्यूज किसी भी किस्म के हो बट शेयर योर थॉट बिकॉज ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है एवरी सिंगल डे यू मेक अ चॉइस जब हम सुबह उठते हैं तब काउंट योर ब्लेसिंग डोंट से दैट आई एम टायर्ड प्लान मेक इट बेस्ट दैट्स योर चॉइस सही कहा एक इंसान मेक योर चॉइस इतने सारे हमारे पास सीट्स हैं ये कहीं भी बैठ सकता था और ये भी बिल्कुल उसी तरह से एंजॉय कर सकता था बाहर की सीनरी लेकिन ही chose the rocky mountain black dark and thing and he is so upset but he had a choice he missed it so choice is yours if you want to leave or not if you want to live your life or not ask yourself I want to live my life I need to respect my life ठीक है देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एक साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजी के स्टूडेंट थी उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि ये 2 कैदी हैं जेल में जो काल कोठरी में रह रहे हैं और इनको हम आज़ाद करना चाहती है हुकूमत जाओ इनका इंटरव्यू लो जो जवाब निकलता है उनमें से तुम्हारे ऊपर है कि उनको आज़ाद कर दो या नहीं तो वो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजी स्टूडेंट जो है वो गई और उसने काल कोठरी की जब खिड़कियाँ खुलवाई तो दोनों की आंखों पे इतने सदियों से उन्होंने इतने सालों से सूरज नहीं देखा था और रोशनी आई थी चांद की तो बहरहाल वो कहने लगे बंद करो ये खिड़की तो दोनों से उसने पूछा कि आपने क्या देखा बाहर एक ने कहा कि किस कदर खूबसूरत बाहर की दुनिया है चांद निकला हुआ है और उसकी रोशनी दरख्त की छंती में मुझ तक पहुँच रही है और किस कदर खूबसूरत हवा मुझे छूती हुई जा रही है और फूल पौधे लहरा रहे हैं और खुशबू आ रही है और मिट्टी की एक ख़ास खुशबू है और मुझसे रहा नहीं जा रहा ये ज़िंदगी है ये आज़ादी है और मैं कब से इस कैद में हूँ साइकाइट्रिस्ट स्टूडेंट थी उसने लिख लिया दूसरे से पूछा उसने कहा बंद करो ये खिड़की मैं अंदर बहुत खुश हुई अजीब वाहियात किस्म की रोशनी आ रही है मेरी आंखों पे लग रही है और बाहर तो अजीब सा मौसम हुआ टेढ़े मेढ़े फूल पौधे लगे हुए और चिंगादड़ लटके हुए और अजीब ही सूरत हाल है कीचड़ है ज़मीन में ये क्या ज़िंदगी है इससे अच्छा मैं यहाँ हूँ सुकून से हूँ तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई इसकी सज़ा डबल कर दो और इन साहब को आज़ाद कर दो जिनको नज़र आ रही है बाहर खूबसूरत ज़िंदगी तो आपके ऊपर है हमारे ऊपर है कि हम ज़िंदगी को कैसे देखें ठीक है आगे चलें सर तो दैट्स चॉइस इज़ योर्स आप किस तरह से किस चीज़ों को देखते हैं अच्छा ये देखें ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि हम अपने गोल को कैसे हासिल करेंगे You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Right? Just move forward. Just take a baby step. Just take a baby step. You don't need to look it out. Oh, मेरी मंजिल बहुत दूर है. No. All right? All right. That's the Edison thing. Thomas Edison. He discovered 1,000 ways. Go ahead. Okay, that goes to me. Maybe not. Maybe you guys wanna. I wanted to inspire people. I want someone to look at me and say, because of you, I didn't give up. All right, so keep in mind, there was a guy who came, and because of you, I didn't give up on my dreams. And I wanted to achieve it by any means. All right, that's what I'm expecting. All right. Okay, another good thing, because that's not the major. Grades don't measure intelligence, and age doesn't define maturity. Right? It doesn't mean like somebody is good and study, and teachers is telling them, and he or she knows the secret to copy and paste, and get, that's my word. She copied the same thing, 100 out of 100. This is not the way. The way to find yourself
something new, something phenomenal, something out of the stand. Because who doesn't want what I'm saying? If you're going to say my word, same as it is, I will be glad. So that's the wrong concept. A smart is something else. All right? It doesn't count like a position holder or something. It means they are genius. No, that's just a calculation. Everybody's genius. Because as we know that Bill Gates, Thomas Edison, they were not highly qualified. Michael Jordan, when he went to the school and teacher said, oh, you're useless. You don't need to study because you cannot focus yourself. And he came over and he tried to put himself in basketball and he failed. And he cried a lot when he came home. But he never gave up. And he becomes like one of the best basketball player and billionaire. Well, all right, this is for environmental things. You know that, don't you? Our like CBAT has, we know that Dr. She has some very good knowledge about algae, and she knows the truth because what we are doing with our seas and shores, we're putting some garbage because we are collecting algae and we know that, right? So please take your first step to do anything good. Be an example. Be an example. Be an example for everybody that's like, oh, I was thinking the same, but I don't have dare to do that. But she did it. He did it. Aha. All right? Good. All right. No matter how you feel, get up. No matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up. All right, guys. So this is time to wrap up. And if you guys have any question, you can ask me. So almost done. I'm gonna go just to the bottom. Yep. Not. All right. This one. Yep. All right. Do you guys have a pen and paper? So please write it down, and you guys can visit it. All right. Write down this information. If you need anything or any assistance, just call me as long as I'm here. Oh, sorry. Just visit our fan page or email me, shoot me, whatever you feel like. Okay. Just give me a sec. Just write it down, guys. Anything if you want to ask. Sir, I would like to ask a question. Yes, please. Sir, you as you said that don't react the same. Don't what? Don't react the same. Sir, sometimes we have to react same to stop someone please us again and again and again. Sometimes we have to show ourselves like Okay, I understand your point. Or they won't stop this please again and I don't realize. They're not realizing or like we have to cross our limits, our patience and everything. Okay. So, how can you say All right. That's a good question, and I understand where you came from and what does that mean. You had a hard time, and the way you ask, like sometimes people become so weird and that's into our nerve. And it's hard to bear them, right? So what is the best way? Because never allow anybody. Just stop them. Never allow anybody. What they're going to do? They're going to take some advantage. Never allow. Okay, you know what? I'm going to step away. I'm going to stay away. I can't get it. Never allow anybody to let you down, to bring you down. But you don't need to fight. You don't need to be cruel. You don't need to be. There are several solutions of any problem. Every problem has more than one solution. But never allow anybody, if somebody trying to let you down, making you like a laughing stock and laughing at you. Now stop it. What's funny? Why are you laughing at me? Yeah, you gotta be brave. That's what I said. I guess you guys came a little bit late, right? The first I told them that you gotta be smart and brave enough to ask questions. Do not take care about the rest of the people. Because the biggest fear is what people will think about me. What he, she, and they're gonna start laughing at me. No. So ask question and dare. Dare is brave, but do not cross the bottom. That's a thin line between being arrogant and being polite. Don't be arrogant. All right? So just stop them. You know what? I'm sorry I can't.
All right, I can't get that. I can't. Don't give me that. Don't give me that. I'm not here to please you. Don't be a pleaser. आप उनकी खुशी के लिए अपनी बातें अपने ऊपर बातें सुनते रहेंगे? नहीं, हमने बात की है कि डोंट बी प्लीजर. आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना सारा दिन आपका ख़राब जाएगा. और वो लोग नहीं हैं जो आपके घर में राशन डाल रहे हैं, वो लोग नहीं हैं जो आपके बिल का, बिजली का बिल, पानी का बिल पे कर रहे हैं. So you have to take care of yourself. Don't be arrogant. Be polite. But say, no, I want to keep a stay away from myself from that kind of thing. All right, clear? All right. All right, so guys, that's all okay. And thank you very much. If you guys have any questions, anything, and I believe this seminar is it's being beneficial for you, and you guys got the most out of it. Is that right? Yes. All right, perfect. What else I need? Excellent. All right. All right, guys. Thank you very much. If you have any question, ask any final question. I'm just going to wrap it up. Everything. Any questions? All right. Nope. Thank you very much once again. All right. Excuse me, guys. Just give me a second, like. कि वो यहाँ मतलब बहुत पेशेंटली ये सब कुछ बैठ के सुना और डिस्कस किया. And also thankful to Asiyar. He's also my student in MSc. So I'm really pleased to see him. आपने भी जो क्वेश्चन पूछा ना कि अगर कोई हमें बार बार परेशान करता है तो उसको कैसे रोकना चाहिए. देखिए look at him. जब ये स्टूडेंट लाइफ में था वो थोड़ा सा एग्रेशन था. Now you can see him उसमें किस तरह से इस चीज़ को रोक. This is the example of your question. ठीक है? Thank you so much. Have a nice time. Thank you very much. Thank you very much.